बिलोंग करते हैं। तो राइट डाउन योर नेम एंड स्टेट इन चैट बॉक्स। मैं विश्वा फ्रॉम गुजरात, तो मैं लिखूंगी विश्वा गुजरात। तो आप सभी अपना नाम और स्टेट लिखिए, तो हमें जानने में आसानी होगी कि आप कहाँ से हैं। प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। Yes, I feel someone feels so shy. We do have many participants from different corners of India. Like we have Priyanka ji from Bangalore, Nishat ji from Mumbai, Ashmin ji from Kerala. Wonderful, wonderful. Kasturi ji from Bangalore. Welcome, welcome, welcome everyone. Yes, Vishwa ma'am. Yeah. Yes, yes, yes. तो आज का हमारा जो सेशन है वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड के ऊपर है। आई होप कि आप सभी जानते होंगे हाइपर एक्टिव चाइल्ड क्या होता है। जो जानता है कि हाइपर एक्टिव चाइल्ड कौन है वो चैट बॉक्स में मी टाइप करे। राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन मी। जिसे थोड़ा सा भी पता हो कि क्या है हाइपर एक्टिव चाइल्ड, वो प्लीज यहाँ पे टाइप करें। Wonderful. We are getting answers, madam. We are getting answers from Priyanka ji, Nishat ji. Wonderful, wonderful. So some of the parents are knowing that what is hyperactive child, but I believe बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हाइपर एक्टिव किसको बोला जाता है, राइट? सो कैन यू प्लीज लेट अस नो कि भाई आज के सेशन में क्या होगा। हाँ, हमारा जो आज का ये ब्यूटीफुल सेशन है वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड के ऊपर है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड क्या होता है कि सभी बच्चों में, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होती है। तो कभी कभी हमें उन्हें हैंडल करने में बहुत मुश्किल होती है। कभी हमें लगता है बहुत उछल कूद करता है, बहुत मस्ती करता है, हम इसे संभाल नहीं पा रहे। कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी हमारा कुछ मानता नहीं है। सब बाहर भी बहुत मस्ती करता है, हम परेशान हो जाते हैं। पर बच्चे तो ऐसा करते ही है। तो अगर हमें उन्हें संभालना है तो हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कुछ सॉल्यूशन चाहिए जिसे हम उन्हें अच्छी तरह से संभाल सके। तो आज हम उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सभी यहाँ पे वीकेंड की इस आफ्टरनून में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। तो मुझे पता है आप कुछ ना कुछ हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पर मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम उससे कहीं ज्यादा आपको देंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज स्पार्टन पेरेंटिंग? Okay, what is Spartan Kids? Spartan Kids is making wonderful and amazing products for kids. They make toys, puzzles, and flashcards, AI flashcards. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं स्पार्टन किड्स हम, जो कि बच्चों के अर्ली ग्रोथ के लिए, अर्ली एजुकेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, उनमें उन्हें बहुत मदद मिलती है। तो हम ये सब तो प्रोवाइड करते ही है, हम ये मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन करते हैं। तो ये हमने जो डिजाइन किया है, हमने बहुत सालों के रिसर्च के बाद किया है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के रिव्यू लेकर किया है। तो इनसे आपके बच्चों को और आपको बहुत इजीनेस फील होगा पेरेंटिंग में। तो स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी इज अ पार्ट ऑफ स्पार्टन किड्स। स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी में हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप करते हैं, एक्सपर्ट्स के रिव्यूज लेते हैं, जिनसे आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। हम और जो ये वर्कशॉप करते हैं उसके पॉडकास्ट और वीडियोस यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, उस पर भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं यस, सो मैं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा विश्वा मैम कि अगर इन लोगों को, मतलब हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको अगर ये सारी चीजों का एक्सेस लेना हो तो सबसे इजीएस्ट रास्ता क्या रहेगा, क्या आप बता सकती हैं प्लीज? हाँ, अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स को इन सभी चीजों का बेनिफिट्स चाहिए तो उन्हें हमारे फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिंक चैट बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी टीम आपको वो शेयर कर देगी चैट बॉक्स में। प्लीज शेयर।
Yes, wonderful. So I believe our team has already shared this link, Facebook ग्रुप की लिंक, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपकी पेरेंटिंग के लिए बहुत ही काम आ सकती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. इट इज अवर गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू. ओके, यस विश्वा मैम, गो अहेड. तो आज के वर्कशॉप से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? वर्कशॉप का मीनिंग ही यही है कि आप उनसे कुछ उससे कुछ ऑब्जर्व करें और वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा. तो आपको वो संभाल के रखना पड़ेगा. इसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. तो आप ऐसे डायरी, पेन ऐसा अपने साथ लेकर रखेंगे तो आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा. नो डाउट हम यूट्यूब में भी ये अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट पर भी करते हैं, पर जो लाइव में आप लिख सकते हैं, जो हमें हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो आप अपनी नोट में लिख सकते हैं, अपनी डायरी में राइट डाउन कर लीजिए. और सेशन के एंड में हम अपना एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिससे आपको हेल्प रहेगी. जो भी आपको क्वेश्चन है, सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो आज की हमारी पेरेंटिंग मेंटर है मिस सची सेठ, जिन्हें बहुत बहुत से फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, चाइल्ड के फील्ड में. सी इज अ बीएससी. सी कंप्लीट हर एजुकेशन इन साइंस फील्ड. She has a 9 years experience in this field. She done her education for flashcard in USA and UK. So she is very expert in this field. तो अब मैं ये स्टेज उनको सौंपना चाहूंगी. हेलो मैम, प्लीज. यस, सची मैम, वेलकम मैम. Welcome, sir. Thank you, Vishwa Welcome, ma'am. Thank you, sir, for such a overwhelming experience and kind of an warmth that you have provided. Hello, dear parents. I hope you all are doing great. And today's topic is on attention deficiency, hyperactivity children. ये बहुत common question है. But before I start, I would like to ask, आपके बच्चे के एज ग्रुप्स क्या है? आप सुनिएगा. अगर बच्चा 0 to 3 का है तो आप ए लिखिए, 3 to 6 का है तो बी लिखिए, 7 to 10 सी, 0 to 3 ए, 3 to 6 बी and 7 to 10 सी. Okay, so we are receiving the answers from the parents. That's really nice. Anyone who has about 10 years can write D. That is not a problem. Be participating in the same. That's okay. That's completely fine. We do have mostly A's Okay. and B's, ma'am. We got a lot of replies about A and B. Yeah. Yeah, wonderful. Everybody is participating in this, question answer and interacting with us. Thank you very much, every parents. And meanwhile, I would also like to, जब तक ये लोग आंसर लिख रहे हैं ना, I would also like to give some of the glimpse कि आज के वर्कशॉप में क्या होने वाला है. Okay, so am I allowed, ma'am? यस. सो क्योंकि ना बहुत सारे पेरेंट्स ये क्यूरियस होंगे कि हमने कुछ एक तो पार्टिसिपेट किया था एक कॉन्टेस्ट में, उसका क्या होने वाला है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, राइट? सो दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वी डू हैव वंडरफुल गिफ्ट फॉर द विनर एज वेल एज ऑल द पार्टिसिपेंट्स. हमारे पास 2 गिफ्ट है पार्टिसिपेंट्स के लिए और एक स्पेशल गिफ्ट है विनर के लिए, जो हम अनाउंस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, जब हमारा क्वेश्चन आंसर होगा तब, राइट? सो वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे. उसके साथ आपका जो भी नॉलेज है हाइपर एक्टिव चाइल्ड के बारे में, हाइपर एक्टिव किसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिएंसी क्या है, वो सारा नॉलेज भी बहुत ही प्रीशियस है जो इन सबको मिलेगा, और ये सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है. यस, सो दैट इज द ब्रीफ ग्लिम्स अबाउट द वर्कशॉप. ओके, yes ma'am, we do have a lot of answers and lot of A's and B's we have, ma'am. Over to you. Yes. So, parents, when I ask you a very simple question, क्या attention deficiency या hyperactivity disease है या disorder है? आप मुझे जवाब लिखेंगे चैट में. Do you think it's a disease or it's a disorder?
Write down DI if you think it's a disease. Write down DO if you think it's a disorder. Disorder. Please reply, parents. DI if you think it's a disease. ये बच्चे को किसी से मिल गया है, बच्चे को ये अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव किसी ने दे दिया है. इट्स अ डिजीज. जैसे जुकाम होता है, Madam, you are on mute. Yes, I'm sorry. I just wanted to ask you, do you think that this attention deficiency, hyperactivity is a disorder or it's a disease? Disease का मतलब है कि किसी से मिला या उसको कुछ करने से उसे हुआ. Disorder ऐसा है जो inbuilt होता है. Do you think it's a disease or it's a disorder? If you think it's a disease, write DI. If you think it's a disorder, write DO. Can I have chat boxes filled with answers, please? DO. Okay. More parents, please write. It will be good to share knowledge. Yes, ma'am. We have a lot of parents who feel disorder. Like Shraddha ji said disorder, Garima ji said disorder, Azmeen ji said disorder. Vaidehi ji said disorder. Yeah. So when it's a disorder, that means we can treat it. We do not have to rush to the doctor. It's not an infection, right, parents? If you think it's not an infection and it can be treated, then be a part of this workshop through the end so that we can handle it. Yes, I have a parent who has written, not either. I think it's also the way we handle. Yes. Similarly, that is what I'm trying to tell you. कि हम इस चीज को handle कर सकते हैं. We do not need to go to any child psychologist. We do not need to go to any doctor. We do not need to contact the teacher. We do not need to tell it to our relatives. हमें ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है. It is just a thing जो आप आज मैं और आपके बच्चे के साथ हम ये parenthood की journey fight कर सकते हैं with ADHD. Okay, parents? So shall I start with the workshop? Are you all ready? Thumbs up to just say that you are ready. You can drop it in the chat box. You can turn on your cameras. You can give me a thumbs up. Active parents, please. I need more and more reply. Ready. Yes. Oh, somebody has sent me 5-6 thumbs up. Thank you so much. So I'll be having a short screen sharing with you regarding the workshop so that you get an idea. You can see and you can understand, and that is how we will start the workshop. So can I have the screen sharing, Vishwa ma'am, please? Madam, you are co-host now. You can do. Okay. Sachi ma'am, you can do. Okay. Thank you. Okay, so I Thank you. Yeah. You please. share, okay, ma'am? Okay. So parents, when we, I hope the screen is visible to everyone. Sir, please just revert me if the screen is visible. Yes, it is visible, ma'am. You can make it in presentation view if you feel so. Yeah. Wonderful.
Okay. So now, as we are moving on, you see a complete roadmap for today's presentation. It's a very simple thing. We are just trying to connect you with a hyperactive child and the child having AD, that is attention deficiency. If your child is having attention deficiency, the child will be hyperactive. It is not practically possible that the child will just have one thing in his head. So, as a kid, multiple things run in your brains, multiple things. And those things drop connection in your brain, and from brain it comes to eyes, and from eyes to mouth. That is why in every child we develop listening, reading, and Yeah, I'm sorry. I believe Madam has some issue with the network. Madam, are you there now? yeah, Yeah. sir, I think it's again the host. I'm sorry. So parents, Okay. So, whenever there is this attention deficiency, there will be hyperactivity. It is not only one thing that runs in the child. If the child cannot visualize, the child will not be able to sit at one place. So, always remember this and let the things go with time. Do not ever take it कि आज मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है तो कल वो क्वाइट हो जाएगा. इज इट पॉसिबल पेरेंट्स कि आज बच्चे ने शैतानी की और कल वो शैतान नहीं रहेगा, वो बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड हो जाएगा? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स yes or no? If your child is today notorious, he will be notorious till he doesn't understand, right? Are we having the responses? yes, ma'am. Anmolji said no. So it is practically not possible to have a child develop certain parts of his growth just like that. It will take time. You need to give that time to the child. And this journey of hyperactivity to a very calm and cool child is a long-term process. So are you ready to invest time in your children? Please write yes if you are ready. I would expect if we are 30 participants, I would request all the 30 participants to be a very proactive parent. Please write down if you are proactively ready to give time to your child to generate his journey to excellence. Come on, parents. Yeah, we are getting a lot of answers, ma'am. Silpa ji, Prerna ji, and yeah, Miss Sharma. Lot of people are answering us, and they are so active, and they are all ready to grab all this knowledge. Yeah. So now a very common question: what is hyperactivity? But before I start into this, can I know how many senses do we have? Parents, I want you to write the number of senses do we have. 4, 5, 6. How many senses do we have? 5, 6. Okay. Very good. Thank you. Thank you for answering. We generally hear that we have 6 senses. 5 senses are the touch senses that we have: eyes, smell, to see, nose to smell, ears to hear, tongue to taste, hands to touch. But there is a 6th and the 7th sense that develops in an hyperactive child. Yes, it is interesting.
Just imagine a hyperactive child with 7 senses. Yes, right in front of you. The 7th sense quality that a hyperactive child has is his and with his legs. A hyperactive child will never sit at one place. The child will be inquisitive to do many things. अगर आपने उसको कलरिंग दिया तो उसको राइटिंग करना है, अगर आपने उसको राइटिंग दिया तो उसको कलरिंग करना है, अगर आपने उसको बोला कि लेट्स गो प्ले आउटसाइड तो उसको घर में खेलना है, अगर आपने उसको ऐसा बोला कि आई वांट टू डू दिस विथ यू, ही वांट टू डू द अदर थिंग्स विथ यू. Do you face this in your children? Do you face this much of indecisiveness in your children? Decision nahi le pa rahe hain bacche. Are we getting the answers? Okay, please write down. Do you feel this? If it's your child, you feel that the child is indecisive. अगर उसको मैं उसका फेवरेट टॉय दे रही हूँ तो वो टॉय नहीं खेलना चाहता और वो टॉय खेलना चाहता है जो मैंने ऊपर रख दिया है या उसको नहीं पसंद आता था. Are we getting responses? Yes, we have one response, ma'am, from Silpa, ma'am. She said yes. This is what is called activity through brain, through eye and through head. जो उसके हेड में ब्रेन है वो उसको वो सिग्नल्स नहीं दे रहा है जो हम चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंड करे. So does it mean the child is not a normal child? No, he is very normal. He understands everything. He reads everything. He goes to school. He gets ready. He does all the normal activities. But the child is hyperactive. The child is fast in doing things. He will not like to sit at one place. She would like to do something that is not allowed. The child might have 10 number of things running in his mind. So that is why they have 7 senses quality in them. And these kids are called very special in just one word because we need to give them more attention. हमें उनको ज्यादा attention देना पड़ता है ताकि वो कहीं गिर ना जाए, उनको कुछ लग ना जाए, उनके जो दिमाग में जो past flow हो रहा है जिसको हम बोलते हैं that the chemicals are running very fast, वो ना हो. So do you agree to this? A hyperactive child requires more attention. Please write yes. Doesn't mean कि हमारे जो बच्चे जो hyperactive नहीं होते, जो quiet होते हैं, उनको attention नहीं देना पड़ता है, उनको भी देना पड़ता है, but these kids require more of your attention. True. Thank you so much for giving me your answers so that this workshop doesn't be only me speaking and you listening, even you are a part of it. This is a very common understanding. AD plus HD is equal to ADHD. A plus B plus C is equal to D? No, right? If A is equal to B, B is equal to C, then C is equal to A. The common maths that we all have learned in our childhood, school, or whatever journey we have in our education. Similarly, if you have attention deficiency, you are going to have an hyperactive child. So when this both combine, it becomes ADHD. And it's a deficiency and that is a disorder. Nothing is a disease. So parents, did you get this? डॉक्टर के पास रश मत करिए अगर आपका बच्चा आपको ADHD enable लग रहा है. Don't rush. So all the parents, do you promise me कि ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप एक बार अपने बच्चे के साथ बैठ के
इस वर्कशॉप्स के जो भी हमने आपको आइडियाज दिए होंगे वो ट्राई करेंगे. प्लीज राइट डाउन आई और thumbs up if you promise me to give your child some time to battle this ADHD. Thank you parents. Moving to the next, I hope you have understood the word attention deficiency and hyperactivity disorder. It has nothing to do with a disease. तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे? Yes or no? अगर बच्चा ADHD है तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे? Yes, no, please write down. I should hear more no, not yes. Thank you so much. Yes, we learned about hyperactivity, 7 sense development. बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, बच्चे को जो करना है उसके अलावा कुछ और ही करता है. Similarly, your question will be, what is attention deficiency? ये पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? Please write down in chat box or give me a up finger if you have seen this movie. A wonderful artist, a child of hardly 6 years, first grade, second grade, was being kept in a hostel because he was not focusing. Yes, this movie is an example of ADHD. इसमें इन्होंने बहुत सारे टीवी एक्टर्स के नाम दिए हैं. अभिषेक बच्चन, and then there were if you remember, Albert Einstein also had some issue with attention seeking visualization, but Albert Einstein. So even ma'am, as far as I remember, Thomas Alva Edison was also having the same characteristic. And one more person, Richard Branson, who is right now owning 400 companies. Yeah, they are ADHD, means इनको भी कोई disease हुआ ही होगा ना sir? Exact. तो कुछ ना कुछ disease. No. The only problem with us is we cannot identify. हम इतना कंपैरिजन फैक्टर में लग जाते हैं या हम इतना स्पीड में लग जाते हैं कि हम ये बच्चे का जो डिसऑर्डर है या डेफिशिएंसी है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. How many of the parents want their child to get first rank in the class? First rank. He should be one of the top children. Honest, huh? Honest. मैं भी ऐसी थी. Even I was one of the example. My 3-year son should know alphabets, numbers 1 to 10 and everything. So parents, are you one of those parents जिनको ऐसा लगता है कि बच्चे को सब आना चाहिए? Should come first. Please write down in the chat box. I have right opened my chat box to understand you all. Please type down. Yes. Any other parent? Please write down. If you feel that you were also like me, that he should know everything. I would expect more parents to answer so that this journey becomes very communicative. But not putting too much pressure. But ma'am, when you start demanding, it is actually pressure. It is indirect pressure that we give to the child. So now when we go to identify, हम कैसे identify कर सकते हैं कि बच्चे को attention deficiency है? अगर बच्चा देख के एक concrete focus पे नहीं आता है. So if the child is doing multiple things and cannot focus on one thing, that means the child is having attention deficiency. अगर आप बच्चे को बोलते हो write B,
एंड बच्चा ऐसे करके ऐसे लिखता है बी, दिस इज द बी दैट द चाइल्ड राइट्स, ही इज अटेंटिव. बट अगर आप बोलते हो राइट बी एंड बच्चा ए और सी लिखता है, यानी ही नोज दैट देयर इज अ बी इन बिटवीन, बट ही डजंट पे अटेंशन टू इट. डू यू अग्री टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या ये होता है आपके भी बच्चों के साथ, स्पेशली नर्सरी, जूनियर, सीनियर? ये राइट एजेस होते हैं जहां पे बच्चे ये सारी चीजों में अटक जाते हैं. अगर आप उसको बोलोगे गेट द येलो बॉल फ्रॉम 6 डिफरेंट बॉल्स, तो बच्चा रेड लेके आएगा, पिंक लेके आएगा, ग्रीन लेके आएगा, पर बच्चा येलो नहीं लाएगा. दैट मीन्स ही नोज, उसको पता है बॉल लाना है, तो वो बॉल जल्दी में लेके आ जाएगा, बट वो राइट कलर का बॉल नहीं लाएगा बिकॉज ही डिड नॉट पे अटेंशन. So do you agree to what I'm telling, parents? Does this happens? Mirror image, yes. I really like this. Mirror image में बहुत ये issues होते हैं बच्चों को. I will answer this question at the end of the workshop. So this all things can help you identify what is, if your child is having attention deficiency. Moving further, I have a very tiny quiz. So are all the parents ready? Thumbs up दे दीजिए अगर आप ready है for the quiz. I have a quiz for all the parents. Okay. Write down your name without speaking. मन में भी नहीं बोलना है, मन में भी नाम नहीं बोलना है. Like तुरंत क्लिक हो गया, मैंने क्या बोला, नेम. जैसे मेरा नाम शची है, विश्वा मैम है, कल्पेश सर है, और भी पेरेंट्स है. राइट डाउन योर नेम विदाउट स्पीकिंग. Okay. More replies, more replies. Many of replies. We have many replies. That means you paid attention to what I said. Now मैंने बोला write down. आपने पेन उठाया, आपने पेपर उठाया, आपने टाइप किया, आपने राइट नहीं किया. So does this mean कि हमारा मेरे क्वेश्चन पे अटेंशन नहीं था? नहीं. मैंने समझाया, आपने समझा, आपने लिख दिया. बच्चे भी ऐसे ही होते हैं. You try to explain them, but in a clear sentence. जाओ पानी का बोतल लेके आओ, और बच्चा रेफ्रिजरेटर से लेके आएगा बोतल, और आप बोलोगे मैंने ठंडा लाने को नहीं बोला था. इसका तो कहीं ध्यान ही नहीं होता है. But you only said get the water bottle. I got it from the fridge. Did you tell me कि आप प्लेटफॉर्म पे जो पड़ा है वो पानी लेके आओ? So this is what it is. We have to be clear with the child. If we say child, get the yellow ball. Get the yellow ball from the baskets of the ball. जो बास्केट में इतने सारे बॉल पड़े हैं, उसमें से एक येलो कलर का बॉल लेके आओ. और फिर भी बच्चा नहीं लाता है, तो आप उसे कलर्स सिखाइए, आप उसे बाकी सारी चीजें सिखाइए जिससे वो येलो कलर आइडेंटिफाई करना सीखे. Understood, parents? Is this workshop going on? What problems you face with your toddlers or with your children? Please write down if you feel so that this is informative for you for this journey. Okay. Now we only AD and only HD. Yes.
कितने बच्चे डे ड्रीमिंग करते हैं? मैं भी करती हूँ, मैं तो बहुत करती हूँ। मैं तो डे ड्रीमिंग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह पहुंच जाती हूँ। आप भी करते होंगे, कभी कभार आपका ध्यान नहीं होता है, कुछ सोचने लग जाते हो, उसको भी डे ड्रीमिंग बोलते हैं। तो डू यू ऑल डू डे ड्रीमिंग? विश्वा मैम, क्या आप डे ड्रीमिंग करते हैं? यस, मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कई बार चली जाती हूँ कई जगहों पे। तो इससे क्या होता है दैट वी हैव अ विजन। तो ये गलत बात नहीं है। डे ड्रीमिंग इज नॉट रॉन्ग, इट इज अ सिम्टम, इट इज नॉट अ फॉल्ट। बच्चे में ये गलत नहीं है, बट जिन बच्चों को अटेंशन डेफिशिएंसी है वो डे ड्रीमिंग ज्यादा करेंगे। उनको अगर आप कुछ काम दोगे ना, तो उस काम के अलावा वो कुछ और ही सोचने बैठ जाएंगे। जैसे तारे जमीन पे वो ईशान था, जिसकी मम्मी उसको होमवर्क करवाने को बोलती थी, पर वो किसी और ही दुनिया में चला जाता था। सो दैट इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग। सो इफ योर चाइल्ड हैज दिस टेंडेंसी, अगर उसको ये टेंडेंसी है कि वो डे ड्रीमिंग करता है, तो दैट मीन्स दैट देयर इज सम साइन ऑफ अटेंशन डेफिशिएंसी। Then moving to next, forgets, lose thinking a lot. अगर उसके पास कोई चीज होगी स्कूल पे ले जाने के लिए, जो प्रोजेक्ट उसने रात को खुद से बना के तैयार किया होगा, वो भूल जाएगा। उसका अटेंशन नहीं होगा। उसको इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में नॉट इम्पोर्टेंट ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो उसको सिम्टम्स ऑफ ADHD है। अगर वो भूल जाएगा तो वो हाइपर हो जाएगा। क्या ये नॉर्मल चीज है? हम में भी अगर हम कुछ फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं और अगर हम कुछ भूल जाते हैं, तो वी विल गो इन अ स्टेट ऑफ एक्टिवनेस। हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, मेरे से ये छूट गया, मैं ये भूल गई, ये हुआ, वो हुआ। So as parents, try and fix the symptoms. If the child does daydreaming, if the child forgets, those are minor symptoms of AD, attention deficiency. Yes, forget. बहुत नॉर्मल चीज है ये। किसी पेरेंट को इसका मतलब पता है? प्लीज राइट डाउन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस। मैं वर्कशॉप के बाद आपको ये पूछूंगी। इफ यू नो, डोंट गूगल, डोंट गूगल, नो गूगलिंग। प्लीज राइट डाउन इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ forget. Anyone who knows what does forget means? Well, we have heard about this fidget spinner and fidget toys, right? Yes. But we don't know what exactly the meaning of fidget. So, Sir, have you tried spinning that forget toy? yeah, like it was very, engaging. I get engaged with the same. Do you know कि उसमें कितनी skills develop होती है? No, ma'am. Okay. Yeah. This is the pen. I try to spin this pen, नहीं होगा because I don't have a fidget spinner. But इससे मेरी 4 स्किलें डेवलप होगी। One is my hand movement, concentration, hand eye coordination. वो घुमाया ऐसे, तो हम जब तक वो घूमता रहेगा ना, तब तक हम किसी और चीज पे ध्यान नहीं देंगे, उस पे ही ध्यान देंगे। एंड देन वी हैव एडिक्शन। वो एक बार घुमाया ना, फिर हम बार बार घुमाते रहेंगे। फिर हम कहीं पे काम भी कर रहे होगे ना, तो भी हमारा ध्यान उस पे ही रहेगा। अ चाइल्ड डजंट हैव, ये उसको फिडगेट स्पिनर का पता नहीं होता है, बट व्हेन अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, हम ट्राई करेंगे कि हम उसका अटेंशन कहीं पे डाइवर्ट ना करें। वी विल मेक हिम अ फिडगेट, कि उसका एक ही जगह पे अटेंशन रहे। इफ यू सी, ये बच्चे के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बट उसका अटेंशन एक ही चीज पे है, वो है कुछ पार्क में चल रहा है, क्योंकि वो बैठा है ऐसे।
So we have to make our child a kind of a very concentrate, जो बच्चा concentrate कर सके वैसा हमें उसको बनाना है. So parents, are you there with me? I hope you are understanding that attention deficiency is not a child with a problem. It is a child with a solution. मैं तो ऐसा ही बोलूंगी. मैं मीन्स आई एम विथ माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बीएससी हूँ, बट मैंने किया स्कूलिंग सेक्टर में. माय फादर वाज लाइक, तेरा किसी भी चीज में ध्यान नहीं है. आई वाज गार्डेड एज वन ऑफ द नेम ऑफ हैविंग ADHD. मैं बहुत हाइपर हूँ. आई एम अ वेरी हाइपर चाइल्ड एंड माय सन इज आल्सो लाइक दैट. तो जो मैंने मेरे में इम्प्रोवाइजेशन किए हैं वो मेरे छोटे बच्चे से मैं शुरू करूंगी तो मे बी द डिफरेंस विल बी सीन फास्टर. डू यू अग्री टू दिस पेरेंट्स? इधर कितनी मम्मी सेंसिटिव है, सेंसिटिव मम्मी एंड हाइपर मम्मीज जो भी है. डू यू वांट आवर चिल्ड्रन टू बी द सेम दैट यू आर? प्लीज राइट yes, no, whatever you feel. Parents, please write down yes, no. We will not want our children to have the negative block holes that we as parents are having. Yeah, we are having so many answers from Anjali ji, Azmin ji, Amin ji, Priyanka ji. Everyone says no. This is why do not make your child a bookish child. Make him concentrate with different things around and try and रिलीज, थोड़ा रिड्यूस करवाइए अटेंशन डेफिशिएंसी सो दैट द चाइल्ड इज कंफर्टेबल और ये प्रॉब्लम्स आगे जाके उसी बच्चे को हार्म ना करें. ओके, दे टॉक टू मच. मैम बहुत बोलती है, घर पे बहुत बोलती है, ये करती है वो करती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है या बोलता रहता है. डू यू फाइंड दिस प्रॉब्लम इन योर चिल्ड्रन? दे टॉक टू मच. अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे होंगे, they will catch what you are talking and then they will start imitating you. Do you face this? Yes, ma'am. We do have many parents who are facing this. In fact, I am also facing this. Why does this happen is, sir, because the child wants to learn a lot and fast. They do not want to wait. This generation is not, हम में भी patience नहीं थी, उनमें तो बिल्कुल नहीं है. तो with this generation what happens is they don't want to wait. So whatever is coming in their mind, they want to talk it out, be it right or be it wrong. And this way we can understand what vision they are developing. So parents, I would request, if your child talks too much, engage the child in writing those things down. Do not अरे आप बहुत बोलते हो, आप बोलना बंद कर दो. नहीं, मेक श्योर अगर आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, वो बोलना चाहता है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, आप बोलिए बच्चा मैं काम कर रही हूँ, आप मुझे सब कुछ लिख के दे दो, मैं काम खत्म करके पढ़ लूंगी. This will make them grow their attention. क्योंकि जो बच्चा बोलेगा वही लिखेगा. आई वॉन्ट चॉकलेट, आई वॉन्ट पिज्जा, आई वॉन्ट टॉय. और इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का वोकैबुलरी कितना डेवलप हुआ है, कितना वो स्कूल से सीखा है, कितना वो नए वर्ड्स डेवलप कर रहा है. सो मेक श्योर आप उसका अटेंशन ऐसे डाइवर्ट करें. विल पेरेंट्स ट्राई दिस? प्लीज राइट yes if you are going to try this. And trust me, this is going to make your journey beautiful. Are we having replies? Yes, Yes, ma'am. I believe so many parents are getting wonderful insights and they are ready to try everything. Yeah. Okay. Moving to next. We discussed symptoms. Now we are discussing signs. अभी पेरेंट्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर सिम्टम्स एंड साइन, डिफरेंस क्या है मैम? सिम्टम्स है अगर मुझे भूख लगी है तो सिम्टम्स है कि मैं खाने को देखूंगी, फिर मैं खाने के पास जाऊंगी,
फिर मैं वो खाना देखूंगी कि मेरे टेस्ट का है या नहीं, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड सिम्टम्स। साइन क्या है? साइन है कि मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में से आवाज आ रही है गुड़ 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 गुड़, सो दैट आर कॉल्ड साइंस। डू यू अग्री टू दिस? सिम्टम्स एंड साइंस, right? Yes. Signs are always action taking. Signs are never symptoms. Symptoms is a solution. Signs are always action taking. They will keep on making mistakes. Unnecessary risk. Toddlers, जितने भी पेरेंट्स इधर है टू द वर्कशॉप, जिनके बच्चे टॉडलर्स है, सोफे पे चढ़ गया, सीढ़ी पे चढ़ गया, उल्टा उतर रहा है, गादी पे से उल्टे वो मार्शल आर्ट्स कर रहा है. So this is what unnecessary risk. And yes, I'm having parents in the chat box. Please keep on writing so it becomes really interactive. So these are the signs of ADHD. If your child is not taking risk, इसका मतलब ये नहीं है कि he is a perfect child. That means we need to push the child to go out, to take some risk. But वो risk का limitation हम तय करेंगे, वो बच्चा तय नहीं करेगा. We will decide it. But if there are children who take unnecessary risk, make careless mistake, सीजर उठा लिया. Now imagine सीजर जैसी चीज 3 साल के बच्चे ने उठा ली. It is going to either cut his hair or his finger. Obviously, right? So these all things are the signs of a ADHD. And trust me, parents, where there is HD, there will be AD. Where there is AD, HD will be there. A child can not only be attention deficiency, a child can not only be hyperactive. It is both together makes the child ADHD. और ये वर्ड इसीलिए छोटा कर दिया है कि आपको टेंशन ना हो. जब टीचर्स ऐसा बोलती है ना, मैम योर चाइल्ड इज हैविंग अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हम आ जाते हैं टेंशन में और हम सोचते हैं इसके लिए मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं. एंड जब टीचर बोलती है इसकी साइंस और सिम्टम्स ये है मैम, ये क्लास में ये करता है, वो करता है, ये नहीं करता, क्लास में भी ग्लास का था वो गिरा दिया. अरे बच्चा है, वो गिराएगा. इट्स ओके, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट अ डिजीज. सो पेरेंट्स डोंट रश टू अ डॉक्टर. पीडियाट्रिशियन के पास तो इसकी कोई दवाई है ही नहीं. सो आप प्लीज पीडियाट्रिशियन के पास भी मत जाइए. सर टीचर ने बोला है माय चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ADHD. No, it is not a problem. Okay, parents, do you get what I'm trying to say? Don't rush to the doctor when you find out your child is having ADHD. It can be sorted at the house. How many mothers खाना बनाते टाइम जल गया होगा तो डॉक्टर के पास दौड़े हैं? घर से ही वो करते हैं ना. We do home remedies, right? ठंडे पानी में हाथ डाल देते हैं, घी लगा देते हैं, कुछ बेटनोविट लगा देंगे और 3-4 दिन में वो घाव भर जाता है. सिमिलरली विद द चिल्ड्रन इट्स द सेम थिंग. उनका ये ADHD का जर्नी अगर प्री स्कूल से स्टार्ट होता है तो वो स्कूल आते आते खत्म हो जाता है. वो घाव भर जाएंगे, तो आपको उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है. Okay, parents, I hope I'm clear. Yes, ma'am. Can I interrupt you? Yes, ma'am, please. Okay, so I share something. हमारे गुजराती में क्या कहते हैं कि बच्चे तो मस्ती करेंगे, तो we said बाળકો मस्ती नहीं करे तो कौन? તમે કરશો. इन हिंदी मीन्स अगर बच्चे शैतानियां नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे, और बड़े होके ऐसे मस्ती करना अच्छा भी नहीं लगता. तो बच्चों की यही उम्र है उछल कूद करने की, मस्ती करने की, तो यही एज में ये सब करेंगे वो लोग. True, ma'am, true, 110%. बट इस एज में जो आपने बताया कि अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो हम करेंगे, तो हम बच्चों के साथ वो मस्ती कर सकते हैं. हाँ, हम बच्चों के साथ कर सकते. We will be doing it. Yes. Moving to the next, hard time to resist temptation. Chocolate. कितनी मम्मियों को ये शिकायत है कि मेरा बच्चा दिन की 2 चॉकलेट तो मांगता ही है. How many mothers have this complaint? Please write down me.
If you feel, because I am also one of those mother. Do you feel your child does not resist the temptation that the child gets? Chocolate, another symptom to make child hyper. Candies, yes. चॉकलेट्स में जो शुगर आता है ना, बच्चों को शुगर रश हो जाता है. दैट्स व्हाई वो रात को सोते नहीं है. अगर चॉकलेट आइसक्रीम खाया होगा तो बच्चा रात को हाइपर एक्टिविटी करेगा. सो दिस इज व्हाट इट्स वन ऑफ द साइन. अगर वो खाना मांगता है तो वो एक डिश 10 बार मांगेगा आपसे. इट्स हार्ड टू रेजिस्ट. ऐसे बच्चों के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेट टारगेट्स. संडे को चॉकलेट मिलेगा. अगर मंडे टू सैटरडे स्कूल के लिए रेडी, स्कूल होमवर्क डन, सारी चीजें आपके घर पे जिस हिसाब से रूटीन है वो आप कर लो. So the journey of this resisting will increase into attention. The child will pay a lot of attention to get the chocolate. Do you agree to this, parents? Can we try? Okay. Mine every Monday chocolate day. Nice. But ma'am, we can try this. We can set up a target. Week mein once you get your favorite chocolate, if you do this, that is why we say lalach buri bala hai, and we have to give lalach so that the children do not be hyper. Yes, have trouble taking turns. This is a very common problem in the parents. ये चीज के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. माई सन, he was playing and he was constantly playing. मैंने 4 बार उसको आवाज दी, उसने नहीं सुना. And then when I loudly said, he did not like it. So basically he had a problem taking the turn. He did not understand कि मम्मी मुझे 4 बार बुला रही है तो उसको कुछ काम होगा. He understands everything. अगर उस टाइम पे मैं ऐसा बोलूंगी कि कबीर, will you like to have a chocolate? He will understand. कबीर, let's go out for the rides. He will understand. कबीर, let's do coloring. अगर उसको coloring करना होगा तो he will understand. But जो game वो खेल रहा था, jumping कर रहा था, उसमें उसको बाहर नहीं आना था, तो he did not listen to me. So that means my child is having attention deficiency. And as he is jumping, he is hyper. Do you all face this some or the other way? क्या ये example आप अपने साथ relate कर सकते हैं? Please write yes if you face this. Please write no if you are not facing it. This example in some or the other way. Yes, Anjali ji says yes. Asifa ji says yes. So these are the common signs of the child being hyperactive and having attention deficiency. I hope parents, I'm clear with you when I'm talking about all this. Being alone. Sometimes ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और मैं ये हर पेरेंट्स के साथ आज रिक्वेस्ट करूंगी कि मेक श्योर आप अपने बच्चे को पब्लिक में कुछ ऐसा ना बोले that the child detaches himself. The child should not like to be alone. अगर बच्चा be alone कर रहा है तो we have to push the child to get in the group. जब बच्चे को अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी होता है तो उसके चारों दिशाओं से उसी बच्चे को प्रेशर आता है और फिर बच्चा ग्रुप छोड़ देगा और उसका जो ये दिमाग है उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन से ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे बिकॉज फ्रॉम एवरीवेयर ही इज हियरिंग नो. No, you are not doing it right. Negative, negative, negative. So, parents,
Do you agree to me that you are not going to allow your child to be alone? Please, it's a request. We'll make sure that the child will be actively participating in the group and will not stay alone. Please write down yes if you are with me in this. I'm just having one yes. I want all the participants to write yes or their opinions in this. Please write down. We have a replies, ma'am. Yes, yes, yes. Many answers from parents. Thank you. Yes, Aji, Emily ji. So these are the signs of a ADHD child. Parents, AD पहले आता है, HD बाद में आता है. नहीं, बच्चे को पहले आया बुखार, फिर बच्चे को हुआ सर्दी, तो उसको बोलते हैं बीमारी. बट बच्चे को पहले आया अटेंशन डेफिशिएंसी और फिर आया हाइपर एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, जो हम ऑर्डर में ला सकते हैं. So parents, today we decide that we will fight with ADHD. Yes, please write down. We are the warriors, right? We will fight ADHD with our children. And in this league, even I am with you. The more the response, the more it is communicative. Yes, Anita ji, Ankita ji said yes. Priyanka ji said yes. Manjunath Sharma ji said yes. Silpa ji said yes. Madam, actually everyone is participating. I believe internet speed is slow. That's why we are getting the slow answers. Otherwise, everyone is participating now. Thank you so much, sir. Thank you for letting me know. Yes. Moving to types of ADHD. Yes, ADHD में भी types होते हैं. There are 3 types in ADHD, out of which one is inattentive. I'm sorry. Okay. Yes, one is inattentive, one is hyper impulsive, and the third one is, just a minute. The third one is combine of both of this. So try and understand one thing. If the child is inattentive, the child will be hyper. If the child is hyper, the child will be inattentive. This is a very normal thing that we face in our routine with the child. अगर आपने बच्चे को एक जगह पे बैठने को बोला है और उसको बोला है कि आप इधर बैठ के होमवर्क करिए, जब आप 10 मिनट के बाद जाएगी, बच्चा वहां पे नहीं होगा, होमवर्क वहीं पे ही होगा. Do you all face this? I faced it with my son. He will never sit at one place. He is really hyper. So उसे करवाने के लिए I have to be active. I have to be with the child. बच्चे पे छोड़ नहीं सकते. We cannot let the child be inattentive to make him attentive. Do you understand, parents? हम बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं देंगे अगर हम उसका attention लाना चाहते हैं तो. And always remember, child में combinations होते हैं genetics के, और वो genetics आपके हो सकते हैं, आपके मैटरनल साइड से हो सकते हैं, आपके पैटर्नल साइड से हो सकते हैं, आपके पार्टनर के मैटरनल पैटर्नल साइड से हो सकते हैं, और बच्चा जो देखता है उससे कुछ जीन्स डेवलप होते हैं. Genes development happens till you die. Always remember, genes never stop developing. That is why we say that we have to grow with the child. We cannot tell that I am your mother, I will not play with you. मैंने तो मेरे बचपन में खेल लिया. Right? So try and make sure that you make your child from inattentive to attentive, from hyper impulsive to just impulsive. The child should not be hyper impulsive. I want this phone. No, I want remote. No, I want phone. Arey, decide what do you want. So for that, do not give more options.
हम पेरेंट्स की गलती क्या हो जाती है, हम बच्चे को बहुत ऑप्शंस देते हैं. Either the child is wanting this or that. Why to give multiple options? It is always yes or no. So parents, you can learn from these types of how ADHD is divided and how we can deal with the child. Am I good, parents? Are you getting what I'm trying to say? Yes, ma'am. We have answers. Thank you so Priyanka much. says yes. Shilpa ji says yes. So now I'll be moving to one of the best part of the presentation, and that is managing ADHD. We learned about what is attention deficiency. We learned about what is hyperactivity. We learned about what are signs, symptoms, what are the types. Now let's see how to manage all this. So yes, develop eating habits which are healthy. मम्मी बचपन में बोलती है ना, सब्जी खाओ तो ही दिमाग चलेगा. नो क्या, मैंने तो कभी नहीं खाई तो भी मेरा दिमाग चल रहा है. ऐसा नहीं होता है. It is because if you eat healthy, you will sleep healthy and you will be wealthy. This is how what I have learned in my life. If I eat healthy, I will sleep healthy and I'll be wealthy because the brain accepts the routine. Roti, sabji, dal, rice. Roti, sabji, dal, rice. Monday to Saturday. Sunday is a free day. Next Monday, the child will ask, Mama, can I have pizza that was ordered yesterday? Can I have chocolate? No. Today is Monday, eat this. So set up a routine of healthy eating habits. Daily physical activity. How many of parents go with the child to the park? I go. Do we go with the child to the park and enjoy our time? Yes. What happens in this is we see the child growing. We see the child interacting with other children. We see the child developing focus. We see the child developing sharing habits. Child learning to wait. That will decrease, manage ADHD. So make sure that even in the house, if you cannot take a child outside, jump in the house, run on one place, do some exercise. The child will really enjoy. And then the child will get tired. And when he will sleep, he will eat properly and then he will sleep. So this is what will make your journey of managing ADHD better. Moving to the next. Screen time. As usual, mommy wants to work, mama gave the phone. You're not wrong. आप गलत नहीं हो. आप जो किया आपने सही किया, बिकॉज आपको कुछ काम करना था, आपने फोन दे दिया. बट मेक श्योर आप लिमिट रखिए. आपका काम खत्म हो जाए, फिर आप बच्चे के पास से वो लेके आप खेलिए, उसके साथ बातें कीजिए. क्या मोबाइल में देखा वो उससे पूछिए, ताकि वो बच्चा लोन फीलिंग स्टार्ट ना कर दे. एंड जो उसका साइन था एडीएचडी का के बीइंग अलोन, वो साइन को हम मैनेज कर पाए. जब आप बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हो, यू आर लीविंग द चाइल्ड अलोन with no human factor, no good touch, no feelings connected. So the child starts imitating the characters and will jump, will throw, will dance, will be active. Do we face this problem, parents? बच्चा मोबाइल में जो देखता है वो ही इमिटेट कर देता है. Please write down yes if you are facing the same problem. Yes. Many parents feel this, ma'am.
So that's why make sure that you limit the screen time. Proper sleep, as I said, last but not the least, a child should have proper 7 to 8 hours of sleep. 8 hours से ज्यादा सोने मत दीजिएगा, वरना बच्चा sluggish feel करेगा, उसको कुछ करने का पसंद नहीं आएगा. Better you set up a time that 8 hours, if the child sleeps at 10 o'clock, should wake up by 7 or by 6:30, 7. You do some physical activity with the child. सुबह का टाइम बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए. So make sure you sit with some line book, or if your child is toddler, listen to rhymes and all these things. See the difference. You can easily manage ADHD. Okay. So I hope I have been more informative to all the parents. Is this मैं कुछ workshop? शेयर करना चाहूंगी. Yes, ma'am. ओके मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे YouTube पे अपना बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं और ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं पूरा दिन. तो गूगल में एक ऐसी भी एप्लीकेशन है YT किड्स करके, YouTube किड्स, जो स्पेसिफिकली किड्स को जो लर्निंग में हेल्प करे, जो उन्हें अर्ली एजुकेशन में मदद करे, उसके लिए होती है. तो मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को ऐसी एप्लीकेशन से उनको पहचान करवाए, वो दिखाए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी गिल्ट फील नहीं होगा कि मैं अपना काम कर रही हूँ और बच्चे को ऐसे मोबाइल दे दिया या लैपटॉप दे दिया ऐसे. True. And many other ways to deal with the child when you have your own time. मैं भी पहले ऐसा ही करती थी. To work, I used to give my son a laptop or a mobile, ताकि मैं मेरा काम आराम से कर पाऊँ, और उसकी मैं ये बोलती थी, यानी चक चक चालू ना रहे. This is what we use the word, चक चक. बच्चा बहुत चक चक करता है, you know. But then I literally started understanding that my child's chak chak is actually the learning that he's having. So I started enjoying it. And then what I used to do is, okay, I am working, you do your, he says Dev and Eva. So I said, you watch your Dev and Eva, and then we both will play. And trust me, he understood that now my mama's work is getting over, I have to leave the phone, and now me and mama will go out. So children, they read us. So parents, before I end, I would like to just ask you that ADHD is a very normal problem we find these days, because children try to focus and they cannot because of many X factors. Do not worry. It is not a disease. As I said earlier, it's a disorder which can be brought in the order. So try and working out with managerial skills that we have given to you, and see the difference you see in your child. Google has many ways, but every way will be applicable if you do it. So please, you have to be a part of this journey. And one more thing I would like to add over here, ma'am, that we do have a lot of things in today's session. मतलब आज बहुत सारी आपने tips and tricks दी है. इससे भी एक बढ़िया चीज और एक चीज एप्लीकेबल जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसकी एक बहुत ही बढ़िया ई बुक हमारी टीम ने डिजाइन की है, जो कि हम एज ए गिफ्ट इस सेशन के एंड में हम देने वाले हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को. वन मोर थिंग इज, और भी चीजें आज बाकी है. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन उन लोगों को रेज हुए हैं और उन लोगों ने चैट बॉक्स में शेयर किए हैं, एंड वी ट्राई टू आंसर देम कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम करेंगे. बट बिफोर दैट, I think Vishwa ma'am has some gift for all of the participants. So ma'am, will you please share your gift, whatever it is? Okay, parents. So are you excited for gift? Oh ma'am, everybody is excited. Definitely. Who doesn't like the gift, right? And yeah, we also want to declare one of the winner into this session. So बहुत सारे gifts हैं and बहुत सारे surprises हैं. So let's see what do we have in the house. Many parents have given the answer into the chat box that yes, they are excited. Okay, just a minute, sir. I share my screen.
Okay, so today we have give a beautiful gift for everyone. So any guesses? Okay, so we give a magic book, not for free for everyone, but we give it a 85% discount for all of the parents. In this magic book, you receive 4 books. In one is for alphabet, one for numeracy, one is for picture book, and one is a drawing book, different kind of 4 type of books. Okay, so in this pack, you have received one pen, 10 refills, one eraser. So you can use it more and more time. Your child, I give you assurance that your child feel very comfortable with it and बहुत enjoy करेगा. साथ में learning भी होगी उनकी. तो उनमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, मैथ्स भी है, पिक्चर्स भी है. तो वो एक बार टाइप करके एक बार लिख के वो इरेज कर देता है. इरेज कर सकते हैं हम उसे, तो बार बार उसे हम यूज कर सकते हैं. इससे बच्चों को भी मजा आएगा, उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा. ऐसे हमें बहुत सारे फायदे होंगे. कभी कभी हमें बच्चों को क्या है, वही नोट, वही पेन देते हैं, वही पेंसिल देते हैं, तो वो बहुत बोर हो जाते हैं. इससे उन्हें कुछ नया मिलेगा. सो वो इजीली प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, वो खुद से करना चाहेंगे. इसलिए मैं टीम को कहना चाहूंगी कि वो हमारी जो लिंक है वो आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे, जिससे कि Wonderful. आप ये Yeah, team has already shared the link. So all the parents, this is a magic book which can be used multiple times. So आपके बच्चे बहुत सारी चीजें multiple times कर सकते हैं, and it is highly interactive and highly attractive. आप लोग इस सेशन में आए, आप कुछ करना चाहते हैं, so as a gift we are providing you 85% discount on this particular product, which is actually of 999 rupees, 1000 rupees, but we are providing you at 85% discount, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप इस लिंक से यूज कर सकते हैं, इस लिंक से परचेस कर सकते हैं. लिंक इज इन द chat box. So after this, we would like to lead to the question answer session. Yeah. So now anyone would have a question, please, raise your hand and on your camera so that we can, ask, we can cater your answers, please. Yeah. Anyone would like to ask any question? किसी को कोई question है? Okay. I believe Manjunath Sharma ji has some question. Wait a minute. Yeah. Can you please on your video so that I can, Sharma ji? Yeah. Just Yeah. Take your time, no issues. sir, video is not onable because I'm Fine. feeding kid. Yeah, So- fine. You can ask the question now. Sachin ma'am will answer the question, please. Okay. So good afternoon, madam and sir and all. I mean the session I attend each and every session. Every session was so wonderful and so inciting. I mean it's like eye opener. Just I'm a mother of 3 months old kid. For me, I have already a framework like how to bring up my kid, what I mean each and every session is like enlightening session. So thank you, Spartan Kids, for that. And thank you, ma'am. Today's session was such a wonderful session. You made us understand each and everything, and you said what it is in the practical life. So first of all, thank you very much for that, ma'am. So coming to the question, so as I said, my kid is 3.5 months old. Like recently when I took to the hospital, I mean, she wanted to stay with me only. She was comfortable with me, even not even comfortable with others. She was seeing the people and crying. Is this too early to develop something, or how can I do this, ma'am? Ma'am, with a child, an environment matters a lot. So if you are taking your child to the hospital, they sense the depression. Okay. It is very simple. Hospital is never a happy place. Nobody likes to go to the hospital, right?
Yeah. Similarly, the child understands that I'm getting separated. So the Okay. child will start crying. Till Okay. the child is 8-9 months, when you are holding the child in your hand, the child will not understand anything. So जब Okay. तक आप उसको vaccines देते हो, सब देते हो, the child will take it, will cry, and you will bring the child home. Yeah. But the moment the child senses that, okay, this environment is not good because people coming over here comes with a pain. Children have this tendency to grab negative things faster, ma'am. All Yeah. the children, Yeah. be it your, be it mine, be it any child, they will Okay. never sense the positivity first, but they will sense the negativity quicker. Yeah. So what you can do is, ma'am, try avoid certain places where you find your child will get detached from you. Okay. And with time, make sure that the child understands that what is hospital, what are community helpers, and that will happen with the age. So you don't need to worry about it. Okay? Yeah. Yeah, just as a mother, as a first kid, I wanted to. We are very progressive, so that is in just my mind. Taking No, no, ma'am. an evening You are walk doing would a be very helpful, great. ma'am. Taking an evening walks outside, is that would be helpful? Evening walks or anything like that. Ma'am, evening walks are always good. Make a positive conversation with the child, and you can have a good time with the daughter. Okay, ma'am. Daughter Okay. or son, whatever you're having, you can have a very good time. But make sure that the conversation is positive. No negative in the conversation. No, So no. when I do a conversation with my son is that I say, to be a good child, you have to do this. I will never say you are not a good child, so because you are not doing this. Okay. So you can also try that. You can have a positive conversation. Okay, ma'am. Okay. She's just 3 months. I mean, I'm expecting a bit early from her. Right? A 3-month child, with my journey and experience, Kalpesh sir had the second child, and he started introducing flashcard to the child when the child was in the womb. So that is what is exceptional, right? Children, they get so much connected with the mother first, and they understand the whole psyche that way. So even if be it a 3-month-old child or 3 years old child, you can Okay. always groom the child the way you want to. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, so we do have Azim ji. Just a minute. Let me put you into the spotlight, ma'am. Wait a second. Okay. Yeah. Yeah, Azim ji, you can now ask your question. Please go ahead. Okay, my name is Azmin Asif. I'm from Kerala. Okay, so I have two kids, my own. One is facing the same difficulty. That's why I plan to attend. I'm a teacher myself, and I have two kids here. So I just diagnosed the last day that my kid got ADHD problem. I mean hyperactive and deficiency is there. Okay, so the thing is that he is obsessed with the rotating things. I mean, the fan or something, everything. Whatever he sees, always rotating or something. He's so much obsessed. I don't know how to. It's growing, and I try to connect with everything. I'm doing everything on my part because I'm a teacher. So I know everything, like how to. But thing is that everything he sees, the rotating thing, I can't able to. I don't know what to do. Okay, I'm Okay. buying all the So things. I'm trying to engage with so many things, but the thing is that the rotating thing, I can't do anything. Don't know how to. If we go to some other places, my neighbor's house, or he likes the fan. He likes to see table fan. He will even ask that. He's giving some promise to the other people that
I will give you my AC. Can you give me my fan? Give me a fan. That's the comedy only, but still that much obsessed. I don't know how to control it. So much, Ma'am, one question is, what is the age of the child? 5 years. What is Age. growth age? The mental 5 age years. is 4. He was a premature Okay. baby, and Okay. everything is okay with him, but all this mental age is 4 years, and Okay. everything is he's LKG now. Okay. Okay, so that's the thing. Understood. Ma'am, first of all, I would like to appreciate with the confidence that you have spoken up about your children. I am course. really happy that we are having parents who are open to talk about issues, not problems. Okay. So I would give you an assurance that your child will be superb in mathematics. The Okay. reason why I tell you is children who have a habit of seeing circles Okay. have good counting speed. All Their right. counting speed is very good. It's psychological. Okay. I can explain you one thing. Wait. Okay. How many? This is a box that I'm having, which is round in shape. Yeah, Okay? it's a cylindrical. Okay. It's a cylindrical, and this Yeah. is circle. Your focus will be on how many turns I'm making, not on the object. No. Not on the object, but the turns that Okay. I'm making. The child likes round object. That means the child has a connection with counting. And it Okay. is not a problem. It is not a problem. With age, by 7, 8, 9, when the child will turn exactly 10, you will see a difference in him seeing round products and calculating. So when he sees the fan, he sees how many swings the fans are taking. The round, round, and, because it is innovative for him. Like this moving, and it's like no, Yes. can't I don't know what to say. When we see, That's perfectly fine. That's perfectly fine. okay, My son has a habit of collecting stones. He has a habit of collecting stones. He would give everything to get stones of different sizes. So that's normal. Because their brain connects them with a particular object size. So your son has a habit of seeing spins because he sees something new in that. Every time when he sees a table fan, he would see the color of the fan. He would see the different shapes that are being created. He would try to count them. And trust me, ma'am, this child will be superb in mathematics. I guarantee. And as a teacher, you are a teacher for 100 students, but you are a mother for your own child. Yeah, that's obviously. Yeah. You can never be a teacher for your mother, for your motherhood. You can never be a teacher and a mother together. Either you are a teacher or you are a mother for your own children. So you decide to choose a rule of motherhood. So don't get panic at all. Give it some time with the age. If the child is liking round objects, trust me, he will go very far into mathematics or something that is technical. With Of course, age, he likes this will be technical more things. technical. Yeah, of He course. will try to open the fan. He will try to see the leaves and everything. That all will have his growth. You know something? He has just opened all my phones, my tab, my phone. Because he finds it more attentive. He finds it more creative of twisting, turning. So everything that has a twist, he would like it. He would see the fan, he would like to twist it. Okay, thank you. And the children, they develop mirror image.
So if the fan is upstairs and if it is being shown in your phone, the reflection, we would like to see what is happening in your phone. Of course, yeah, I have noted that. Yeah. Thank you so So much. ma'am, that Okay, is it's how it really is being helpful. connected. Oh, thanks. So don't worry, ma'am, Really. we are here for your queries only. Oh my God. And Yeah, ma'am, it's with really helpful, you with know. the age, Yeah. this problem will decrease, but the anxiety of learning new things will increase. So let him grow. Don't worry. It's just that we need to be careful for our phones and everything, but just let the child grow. Yeah. Thank you. Thank you so And much. as a child development enthusiast, I also would like to say something that your child will be having so much capability to tackle the twist and turns of the life. Okay. So Yeah. I believe it is a more and more positive things rather than the negative one. That's what I truly feel. Yeah. Now I get the encouragement from you people, because till now I was, as a parent, as you said, I'm a mother of 2 kids, and I'm always concerned about what would happen. I don't know how it's like. Is it positive way or negative way? All the parents are facing such inside the worry will be there. He's 7 months that preterm, and so that's why. Okay. So Yeah, I have faced so many struggle. I'll just give you one quick formula that I use. Never be a teacher with your own child. Never be a teacher with your own child. No matter by profession you are a teacher, what you do with your children in the school, you cannot apply it to your own child. Simple. Okay. Thank you. That makes life more easy, na? Yeah, really. Okay, wonderful. And yeah, Asminji, if you have any kind of such issues or anything, you can definitely talk to us. You can definitely be in touch with us. You can join our Facebook group, and we regularly conduct such kind of workshops and different kind of events we are going on in the community. So definitely you can join us, and we will help you to make your parenting journey a fun. That is our mission, actually. Thank you. You are doing a great job. Yeah. Wonderful. Yeah, Asminji. Thank you. Thank you very much. Yeah, we do have Ankita ji would like to ask some questions. Just a minute. Ankita ji, can you please open your video? We would like to see your face and spotlight you if you can. Yeah, just a minute. Let me spotlight you. You're on mute, ma'am. Just a minute. Yeah, now you can unmute and ask the question, Ankita ji. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. Namaste. नमस्ते सर मैम. मेरे 2 बच्चे हैं, है ना. ये मैम, इसका नाम मैम अभिनव है. मैम ये 4.5 इयर्स 6 इयर्स का हो गया मैम. इसको मैम स्पीच नहीं है, हाइपर एक्टिविटी भी है, अटेंशन डिसऑर्डर भी है. हमारी जगह क्या है, हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और अभी हमारा जो मतलब एरिया है वो जिला हुआ है मैम. तो यहाँ पे ना तो स्पीच थेरेपिस्ट है, ना ओटी की सुविधा है, कुछ भी नहीं है. और बाबू भी 4.5 साल का हो गया है, तो उसको भी लर्निंग के लिए आगे बढ़ाना है, तो स्कूल में मैम डाल दिया है मैम, है ना. लेकिन जो इसकी जो एक्टिविटी है मैम वो समझ में नहीं आती. कभी लौटना है, कभी जंप करना है, कभी सीढ़ियों पे जाना है. अचानक से बैठ के खेल रहे, मैं कुछ बता रही हूँ तो तुरंत से छोड़ के भाग जाना है ना. तो ये सब परेशान करता है मैम, क्योंकि स्पीच भी नहीं है. तो मैम दिखाया तो माइल्ड ऑटिज्म बताया, तो कुछ महीने मैं बाहर गई, वहां रह के कुछ थेरेपी कराया 1.5 महीने 2 महीने. इसके बाद क्या है, मैं भी सिंगल बहू हूँ, तो एक और बेबी है, वो भी क्लास 1 में, उसको भी देखना है, घर पे भी देखना है. तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कहीं बाहर रह के थेरेपी कराऊं. तो मैम कैसे करूं, मैम क्या करूं, है ना. मतलब कोशिश भी रहता है कि बच्चे को कुछ सिखाऊं, पर हाउसवाइफ हूँ तो बिजी हो जाती हूँ. कभी फेस्टिवल, कभी कुछ, दोनों बच्चों को मैनेज करना है. मैम पॉसिबल नहीं हो पाता है. स्पीच के लिए क्या करूं, है ना. तो अभी यहाँ ओटी खुला मैम, तो 1 महीने से मैं इसको वहां ले जा रही हूँ, भेज रही हूँ, नहीं बनता तो भेजती हूँ मैम, है ना. लेकिन जो लर्निंग है वो मैम
लगभग अब 4.5 से ऊपर का हो गया, पर जो इसकी एक्टिविटी है वो साल भर के अंदर के जो बच्चों की होती है ना वो सब है। अंडरस्टैंडिंग भी है थोड़ी बहुत पहले से बड़ी है, पर जैसे सुसु ट्रेनिंग, पोटी ट्रेनिंग, ये सब इसको अभी भी कुछ भी नहीं। आप टाइम टू टाइम लेके जाओ तो ये करेगा, इसको हो जाएगा, तो इसको ये सब चीज अच्छा लगता है, इसको महसूस भी नहीं होता कि मैंने कुछ कर लिया, है ना। तो मैम क्या करूं मैम? मैम पहले तो यू आर अ वेरी प्राउड मदर, आई शुड से। इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे के साथ डील करना, इट्स रियली good and appreciation. So from me and Spartan Kids, I would like to appreciate you for your duties that you're doing. Second thing, ma'am, जब mild autism होता है ना, तब बच्चे का sensory development 0 होता है। जो माइल्ड ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनका सेंसेस डेवलपमेंट 0 होता है, यानी होता ही नहीं है ये नहीं है, बट उनको जो सेंसेस का जो टच होता है ना, जैसे सुसु आया तो सुसु आने पे प्रेशर आना नीचे, वो बच्चे को फील नहीं होता है। आप जाके करवा के आओगे तो बच्चा करेगा, दैट मीन्स उसको सुसु आया था, बट ही कुड नॉट फील एंड टेल यू द सेम, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं मैम, आप उनको जो स्पीच थेरेपी में या जहां पे भी आप भेज रहे हैं वहां पे तो आप कंटिन्यूएशन करवाइए, बट बच्चे को ज्यादा विजुअल कनेक्ट करवाइए। इससे क्या होगा, जो वो देखेगा वही वो करेगा, सिंपल है। तो जब आप हो सके तो आप उसको सुसु राइम्स आती है, ऐसी राइम्स है यूट्यूब पे जो लंच टाइम की है, डिनर टाइम की है, अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा। एंड मैम इफ देयर इज अ स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच डेफिशिएंसी फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा साउंड तो बोलता है ना, बच्चा बोलता तो है, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं है। दैट मीन्स बच्चे ने स्पीच लूज नहीं किया है, वो बोल सकता है, बस उसको प्रेशर डालना है कि वो एक्सप्रेस करे। तो आप उसके लिए आप उसको राइम्स दिखा सकते हैं, आप उसको जहां पे स्पीच थेरेपी के लिए भेजते हैं आप वहीं पे भेजिए, नो प्रॉब्लम। वो तो आपका मेडिकल पार्ट है, उसमें मैं नहीं एंटर होंगी क्योंकि वो लोग इस चीज के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। बट आप घर पे जो कर सकते हैं उसमें आप बच्चे के साथ विजुअल कनेक्ट करिए। आप उसको फ्लावर ड्रॉ करके पूछिए ये क्या है, 2-3 बटरफ्लाई ड्रॉ करके पूछिए ये कैसे उड़ता है। तो लेट द चाइल्ड कनेक्ट विथ यू विथ इमेजेस, जितना वो देखेगा उतना वो बोलेगा। मैम लिसनिंग, सीइंग एंड स्पीकिंग गोज हैंड इन हैंड, वो हैंड इन हैंड है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो कहीं पे चढ़ रहा है और वो गिरने वाला है, आपने देखा, आपने आवाज लगाई, उसने सुना, बट वो बच्चा अपनी मस्ती में इतना मस्त है कि वो आपका आवाज निग्लेक्ट करेगा और फिर क्या होता है, बच्चा गिर जाता है, सिंपल। तो मैम हाइपर एक्टिविटी को तो हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे जब तक हम अटेंशन डेवलप नहीं करते। तो पहले आप उसका अटेंशन इन चीजों में डेवलप करिए। हो सकता है मैम इफ यू कैन ट्राई, आप फ्लैश कार्ड से उसका लर्निंग करवाइए, बहुत बढ़िया चीज है मैम। इट इज नॉट के अच्छे बच्चे या जो पढ़ सकते हैं वही बच्चे फ्लैश कार्ड्स यूज करें। फ्लैश कार्ड्स कैन बी यूज्ड बाय एनी एज ऑफ चिल्ड्रन, एनी एज ऑफ चिल्ड्रन। तो आप विजुअल लर्निंग करवाइए, फिर देखिए, ट्राई करिए मैम, एक बार ट्राई करिए। मैम जैसे स्क्रीनिंग टाइम के लिए भी मना किया हुआ है कि टीवी नहीं दिखाना, मोबाइल नहीं दिखाना, है ना, उसके बावजूद भी बच्चा टीवी पे अब न्यूज देखना है किसी को और कुछ करना है तो टीवी तो चल रहा है, हम तो देख रहे हैं, पर ऐसे अगर उसको मोबाइल देना, क्या ये सब सही रहेगा मैम? सी मैम, इसीलिए मैंने बोला विजुअल लर्निंग करवाइए, बट आपके साथ ऐसे ही उसको फोन मत दे दीजिए।
अगर उसका खाने का टाइम है तो आप लंच टाइम का एक वीडियो आता है वो ऑन कर दीजिए, जो उसका वो कार्य कर रहा है ना उसको क्रिया में बदलिए। आप उसको सिर्फ कार्य मत रहने दीजिए, उसको रूटीन प्रोसेस लाइए, तो शायद से वो एक्सप्रेस करना चालू करेगा। मैम अभी बच्चा जैसे विजुअल मम्मा आप बोल बोल पाता रहे हैं ना है, मैम, आपका जैसे बच्चा घर के मम्मा, काम, आपका हम बच्चा जैसे घर के काम करते हैं ना, जैसे मैं झाड़ू लगाऊंगी तो वो भी देखेगा, झाड़ू लेके आएगा। पोछा लगाएंगे तो उसको भी मॉपिंग चाहिए, कपड़े से डस्टिंग कर रहे तो उसको भी डस्टिंग करना है। तो ये सब नॉर्मली वो सीख जाता है। पर जैसे अगर मैंने उसको ए लिखवाया या बी लिखवाया, या उसको मैंने बोला चलो बाथरूम जाना है, तो वो एग्री नहीं होगा, उसको नहीं जाना। ओके, बिकॉज मैम उसको माइल्ड ऑटिज्म है, इट इज ऑलरेडी बीन डिटेक्टेड, बट उस ऑटिज्म को हमें किल करना है, हमें उसको खत्म कर देना। ऑटिज्म भी एक डिसऑर्डर है मैम, वो डिजीज नहीं है। तो उसको खत्म करने के लिए हमें विजुअल लर्निंग स्टार्ट करवाना पड़ेगा, और उसके लिए मैम फैमिली में से अगर सब मेहनत करेंगे तो बच्चा फास्ट सीखेगा। अगर सिर्फ आप मेहनत करोगे तो लर्निंग टाइम थोड़ा स्लो होगा, पर आएगा जरूर। जी एंड मैम आपको एक बात याद रखनी है, बच्चे ने आवाज नहीं खोई है, तो ये कोई शौक की बात नहीं है। बच्चा बोल पाता है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बच्चा उसका प्रेशर रिलीज नहीं कर पाता, बच्चा अकेले रहना चाहता है, तो यू हैव टू इन्वॉल्व द चाइल्ड हम विद जैसे विजुअल स्पीच भी है तो पापा मम्मी दादा दादी मम्मी कभी कभार बोलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब जब उसका मन पड़ेगा तब वो बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा वो। क्योंकि मैम आलस है, ऑटिज्म में आलस आ जाती है, ऑटिज्म में 100% आलस आती है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम करते हैं कुछ इसके लिए। आप भी विजुअल लर्निंग पे जाइए, आपको आइडिया आएगा कि कैसे करना है। और जैसे जैसे आप विजुअली बच्चे को सिखाएंगे, आप उसको बोलिए, बोलो मैंने क्या लिखा है, बोलो, यू आर नॉट सपोज टू स्टे क्वाइट, स्पीक, तो वो बोलेगा फ्लावर, भले टूटा फूटा बोले पर वो बोलेगा जरूर। एंड दैट इज द वे यू कैन स्टार्ट एंगेजिंग द चाइल्ड। और मैम जैसे हाइपर एक्टिविटी है तो उसको किसी चीज में लगा दो, तो अपनी जगह वैसा भी नहीं है कि स्विमिंग करा लूं, फुटबॉल वगैरह करा लूं, मतलब ऑप्शन ही नहीं कुछ ट्रेनिंग के लिए मैम। तो मैम उसका अटेंशन किसी चीज में लगाने के लिए मैम अभी छोटा है, मैम मैम क्या जब करूं तक मैम? आप टेंशन मत लीजिए, जब तक ऑटिज्म रहेगा तब तक ये चीजें रहेगी, जब तक ऑटिज्म रहेगा तब तक ये चीजें रहेगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ऑटिज्म रिमूव करने के लिए आपको विजुअल लर्निंग पे जाना ही पड़ेगा। मैम 2.5 साल का ऑटिज्म था मैम, 2.5 साल का था तब डायग्नोस हुआ था मैम, है ना? उसके बावजूद भी मैम लगे हुए हैं, मैं उसको कलरिंग नेम या फिर बॉडी पार्ट्स वगैरह, मतलब फाइन मोटर एक्टिविटी, मतलब कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी में मैम बताना चाहती हूँ, पर वो चीज कब आएगी उसको खुद से ना मैम, वो चीज के लिए थोड़ी सी। इतना डरिए मत, इतना प्रेशर भी मत लीजिए। अगर बच्चा ऑटिज्म से हिट हुआ है तो बच्चा क्रिएटिव होगा, आप टेंशन मत करिए। हर एक चीज का एक नेगेटिव फैक्टर होता है तो वही पॉजिटिव फैक्टर होता है। मैम मैंने पॉजिटिव आज फैक्टर तक भी होता है, कभी यस मैथ्स मैम। नहीं इतना अच्छे से किया, मैंने कभी मैथ्स इतना अच्छे से नहीं किया था, तो मेरे में वो नेगेटिव था, पर मेरे में स्पीकिंग बहुत इनबिल्ट था, तो मैं उस लाइन पे गई। वैसे ही आपका बच्चा अगर 5 साल का हो जाता है और उसका दिमाग 3 साल के बच्चे तक का है, तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज हैविंग अ 7th सेंस दैट इज डेवलप्ड, which will draw the child in creativity. जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा बच्चा टीचर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ऐसा तो नहीं है, राइट? जो बने अपनी मर्जी का बने, अच्छा करे, वही आप सोचोगे। मैम अपनी मर्जी का बने, अपने पैर पे खड़ा हो, अपना हर काम खुद से करे, क्योंकि लाइफ टाइम मैं उसके साथ नहीं रहूं, तो कम से हाँ कम मैम, उसको तो इतना स्टैंड करना है कि वो
कुछ भी अपने मन का खुद से कर ले। अंडरस्टूड मैम, डोंट वरी अबाउट दिस। ऑटिज्म भी हम रिड्यूस कर सकते हैं मैम। एक चीज हमेशा याद रखने की, दो ऐसी चीजें बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में बहुत टाइम से होती है। एक उनका अंडरस्टैंडिंग और एक उनका इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि मैंने बच्चे को समझाया कुछ, वो समझ गया। दूसरा होता है मैंने बच्चे को ये इंफॉर्मेशन दी और उसने वो इंफॉर्मेशन समझ ली। अंडरस्टूड? दो चीजें हम बच्चे में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बचपन से होनी चाहिए, कि अगर मैं बच्चे को नो बोलूं तो वो नो अंडरस्टैंड कर दे, अगर मैं उसको ये बोलूं कि पिकअप तो वो पिकअप करे। इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। अभी जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनका ये जो अंडरस्टैंडिंग और ये इंफॉर्मेशन है ना, वो ऐसे दबा हुआ होता है। तो अभी आपको एज अ पेरेंट इसको धीरे 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 खोलना पड़ता, और इन बच्चों को ये खोलने के लिए आई विजुअल 100% चाहिए। तो आप ही ट्राई करिएगा मैम। अभी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम चाहे तो ना कर सकते। सो वी हैव टू गिव सम टाइम। और मैम आप देखिएगा जब ये बच्चा 10 साल का होगा ना, तब आप मुझे याद करेंगे कि मेरे बच्चे में सारा डेवलपमेंट स्लोली स्लोली हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि मैम जो एंड डोंट लूज पहला बच्चा है ना मैम, जो पहला बच्चा है मैम, वो साल भर में हर चीज बोलता था। मतलब एक एकदम डाउन है, जैसे तारे जमी पे वाला पिक्चर है ना मैम, एक एकदम स्लो है और एक एकदम फास्ट है। मैम सेम केस है मैम। मैम बट उसी बच्चे ने उसका क्रिएटिविटी फैक्टर, मैंने आपको वही बोला ना, ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर इन द चाइल्ड, जिसको हम हिट कर सकते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। बी को डी लिखेगा, अभी आपके बच्चे का वो स्टेज नहीं आया है, धीरे धीरे वो भी स्टेज आएगा। आप बोलोगे बेड, बच्चा लिखेगा डेड, DED, क्योंकि उसको बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। मैम थोड़ा टाइम दीजिए, विथ एवरी चाइल्ड वी नीड टू गिव सम टाइम, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड मैम यू आर लकी इनफ कि आप इतना सारा बच्चे के पीछे एफर्ट्स डाल रहे हो, और ऐसे एफर्ट्स डालते रहोगे ना मैम, 100% आप ऑटिज्म ठीक कर दोगे, 100%। Within 5 to 7 years you will find a difference in your child, you will। तो मैम ऑटिज्म कोई इतना वो बोले, डॉक्टर बोलेंगे आपको इसको माइल्ड ऑटिज्म है, इसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम है, वो आपको टेंशन देंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैम, डॉक्टर का काम है, उन्होंने बोला आप उसी मेडिसिन पे जो वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आप ट्रीटमेंट रेगुलरली लीजिए। एंड विथ टाइम आप देखिए बच्चे को आप कैसे विजुअल लर्निंग में इंक्रीज कर सकते हैं। एंड मैम फ्लैश कार्ड्स इज द बेस्ट वे ऑफ विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग के लिए बेस्ट है फ्लैश कार्ड्स। तो मैम फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बातें भी करूँ उससे? हाँ मैम, यू टॉक। जैसे आपने अगर सपोज ये फ्लैश कार्ड है एप्पल का और आपने उसको दिखाया एप्पल, ओके बेटा एप्पल इज ऑफ रेड कलर और येलो कलर, बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा। आप गलत बोलना और फिर मेक श्योर कि वो बच्चा सही करे। आप 2 फ्लैश कार्ड्स लेके आप उसको बता सकते हैं विच इज एप्पल, विच इज ग्रेप्स, तो बच्चा आइडेंटिफाई करना सीखेगा, देख के आइडेंटिफाई। एंड मैम जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आप करिए, इट इज नॉट रॉन्ग, तो वो आप करते रहिए। साथ में आप थोड़ा घर पे विजुअल लर्निंग स्टार्ट करवा दीजिए। आपको थोड़ा रात को टाइम मिले तो रात को, आपको जब भी टाइम मिले, और फैमिली में सबको बोलिए कि आपको इन चीजों के लिए थोड़ा हेल्प करे, ताकि आपका जर्नी फास्ट हो जाएगा बच्चे के साथ। ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you, and I really appreciate you, ma'am. You're a really strong mother. You're really a very strong mother.
यस मैम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अंकिता जी कि हमारे कुछ वर्कशॉप्स हैं जो पास्ट में हमने कंडक्ट किए हैं, सची मैडम ने ही कंडक्ट किए हैं. इट इज अबाउट यू नो हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड इंटरेक्टिव विद फ्लैश कार्ड्स. ओके, तो फ्लैश कार्ड के बारे में हमारे वर्कशॉप है, उसको कैसे यूज किया जाए, और भी हम एक गिफ्ट लेके आ रहे हैं उसी चीज के लिए जो आपको बहुत ही जल्द हम बताएंगे. उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हैं जो स्पीच डेवलपमेंट के बारे में भी है, राइट. तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और फेसबुक ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे यूट्यूब और हमारी वेबसाइट पे भी जाइए. उसमें एसपीए करके एक मेन्यू है, स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ओके, जस्ट बी कनेक्टेड विद अस, एंड एवरी फोर्टनाइट वी आर डूइंग दिस वर्कशॉप. इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है उसको हम डेफिनेटली आंसर करेंगे. ओके, एंड जस्ट बी सर द कम्युनिटी. सर लिंक डाल देंगे ना प्लीज? डेफिनेटली, अभी अभी चैट बॉक्स में अभी हमारी टीम ने लिंक डाली है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए. और हर 15 दिन में हमारा जो वर्कशॉप होता है उसको आप अटेंड कीजिए. आपको डेफिनेटली जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा. वन मोर थिंग, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हैव योर फीडबैक. हम आपको पर्सनली भी कॉल करेंगे, आप तब भी हमसे बात कर सकती है. वी वुड ऑल्सो लाइक टू हैव योर फीडबैक कि आप क्या करना चाहते हैं इस वर्कशॉप्स के बारे में, और दूसरी भी चीजों के बारे में भी आपको कौन कौन सी चीजें कवर करना चाहते हैं, हम डेफिनेटली उसको कवर करेंगे मैम. ओके, जी सर, थैंक यू सर. ओके, चैट बॉक्स में लिंक है, आप शेयर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए. थैंक यू वेरी मच. सर ग्रुप में जुड़ी थी है ना, लेकिन क्लास में अटेंड नहीं कर पाई. फर्स्ट टाइम मैं इसमें मैं आज कनेक्ट हुई हूँ. ओके, कोई इशू नहीं है, आपको पास्ट के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, और बाकी के नेक्स्ट ट्राई कीजिए कि आप लाइव का अटेंड कीजिए. अगर आप आज लाइव आई हैं तो आप कितने सारे आपके जो जी. चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया, राइट. आपको जी सर. से ट्रिक्स है, उसके कुछ पाथ मिल गए. सो वही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जुड़े रहेंगे और लाइव सेशन अटेंड करेंगे तो उसका जो एक उसका इफेक्ट होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, राइट. ओके, जी सर, तो जस्ट बी थैंक विद यू अस. सर. Okay, थैंक यू सर. wonderful. Anyone else would like to ask any question? We Yes, are here we to have make your Priyanka parenting Das. really wonderful. Yeah. Priyanka Das, she raised her hand. She dropped Yeah. the chat. Just a minute. Let me add Priyanka ma'am to the spotlight. Priyanka ji, can you please open your video? Yes, Priyanka ji. Wait a minute. Wait a minute. Let me put you into the spotlight. And here you go. Ask your question, please. You are on mute, ma'am. You are on mute. Unmute, please. Hello. Yes, ma'am. Good Uh, afternoon. Actually, good afternoon. Ma'am, I just want to ask you, my child is 3 years old. She's putting everything in mouth. I'm trying my best at everything, whatever. Suppose color also I'll give for coloring, she'll put in mouth. Everything she put in mouth. How to get rid of this? I'm really tired of Very, very normal issue with parents. that I heard that this is sensory some issues, some because he is little going for speech therapy. They told sensory issue. All things are normal, but she is putting everything in mouth. Each and everything she will first test, then she will start doing anything, whatever activities, whatever will do. How to get rid of this? Ma'am, have you ever seen yourself? And have you seen her? That is, I understood. But suppose we are wearing one dress, that stripes also used to put, that are normal. But each and everything, whatever new things she will book. If I will give her book, see the books, she will tearing the book is natural for kids. Okay, she's tearing the book. That is, we cannot say something is problem in that. We cannot suppose to think like that. But she will take book, one story book. I will take her for bedtiming. I will take books. So I will tell you, see the page coloring, and I'm telling you the stories. But she will snatch the book. She will start eating the book first. Okay. Ma'am, all her teeth have come. All her teeth have come. Maybe the last teeth are not coming. That's supposed to come. Oh, ma'am, the wisdom tooths. Yes. Yes. So with the child, what happens, ma'am? They see us eating from their birth. जब भी वो Yes, छोटे yes. होते हैं, they find us eating things and everything. Actually, So- she is not fond of food, but she likes to eat all other things. Okay. So, ma'am, what you can try is you can
give wooden rolls. We have this material available in the market. They are called wooden rolls. Wooden rolls. लकड़े का होता है. लकड़े का होता है. The moment she will put it in her mouth, it will pain. क्योंकि वो hard होता है. ठीक है? And then slowly she will not start putting anything in her mouth. It's psychological. क्योंकि मैम हमें क्या होता है, when we start eating something, if we like it, we will eat it again and again. If we don't like it, we will not eat it. Simple. It is very simple, right? Similarly, with the children, they find crayons as your lipstick. Crayons are lipstick for them. So even my son, though he is a boy, he would apply crayon on his lips. I find it really weird. Then I understood that he saw me doing a lipstick and doing. So they will start eating it. It is common, ma'am. It is very psychological. आप 10 दिन उसके साथ सामने लिपस्टिक नहीं करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे ना, वो क्रेयॉन खाना बंद कर देगी. Trust me. नहीं, वो तो मतलब हम जो भी करते हैं, सपोज मैं फेस वॉश करने के लिए जाऊँ, उसको पता चल जाएगा तो वो भी करने शुरू कर देगी कि मुझे भी करना है करके. But eating means everything. I understood your scenario. and suppose one small chair she will get, now she can hold that also, she will first put in mouth. Ma'am, because for them it is very new and attractive. And जब भी हम भी मैम as she will grow old, that will leave or that is so super much. Ma'am, try with the wooden that idea that I gave you. Wooden stick. Exact name can you tell me? Ma'am, in any stationery store, tell them to give you ice cream stick or wooden stick. Okay. And ma'am, try giving it to her. लो ये खाओ. मैम वो टूटेगा नहीं. And अगर टूटेगा भी ना तो उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा. वो तो फेंक देती है, कुछ भी मुझको पसंद नहीं आने से वो फेंक देती है. So ma'am, that way slowly, but she's just 3 years old. We cannot even get angry or we cannot even use negative word with the child. So try different ways and try कि चलो आज तुमने बुक का पेज खाया है ना, आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तुम्हारा तो पेट भर गया होगा बुक्स के पेज खाते खाते. So try and be communicative in a funny way and see the difference. The child understands. बच्चा हमारे words, expression सब समझता है. And मैम छोटे बच्चे का तो ये रहता है कि जो भी दिखा वो पहले मुंह में डालेंगे. They like everything. गोल बॉल दिखा तो भी वो उसको मुंह से पहले उसको ट्राई करेंगे. So for them it is normal, but for us we have to be very careful कि बच्चे को कुछ ऐसा गले में ना चला जाए या कुछ आपके दिमाग में वही डर रहेगा. So try it with the wooden stick and see. And मैम उस टाइम पे आप बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसको वो कुछ गलत ना कर दे, बस ये चीज ध्यान रखेगा. राउंड लोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर आइसक्रीम स्टिक्स लोगे ना उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. तो ट्राई करिए आप. एंड इफ यू फील लाइक यू कैन एनीवेज गेट बैक टू अस ओवर emails, Facebook. So we will guide you in all the other aspects also. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, anyone else have any question we can cover? Yeah, we do have one more question. Just a minute. Yes, ma'am, you can ask your question now, please. Hello, ma'am. Unmute. Yep. Unmute, please. Hello. Yeah, who is this? My name is Lian. Hello, ma'am. My name is Lian, and my kid is around 2.5, 3 years old. No, almost 3 years old. So the problem that we face is her temper tantrums. That is, she wants something that we cannot give her, and then she starts crying. Every time she cries and screams so loudly that then we have to give in to her demands.
like even to for anything. And sometimes we can't understand why she's crying also. Even if we ask her what happened, you tell us. She's verbal. She says she's very intelligent. She's very smart, but it's only that her tantrums are so much. No, then we get then all others in the room come running. What happened? Why is she crying? Why is she crying? But the thing is, she's making such. Understood, ma'am. Tantrums is a very common thing in the children these days. For any minute things, they will throw tantrums and they will make sure that you fulfill their demands. They will cry, they will hit their head, they will damage themselves. But ma'am, actually, you have to learn to say no, but in a very positive manner. And even in the family, you tell everyone that they should not allow the tantrum to get succeeded into demand. So you can do that. And ma'am, with the child, it is going to be really difficult to control the tantrums, but you can tamper it. So no matter whatever the demand is, and if you feel it is not reasonable, set a target for the child. That, okay, you are 3 years old, but if you need a bag of 7 years old, you need to do this. And then divert the child. And ma'am, even in the family, make sure that everybody supports your decision and do not allow the child to get the temper into taper, so that the child gets all the freedom. Or else the child will be a little stubborn child then. Like if the child is throwing tantrums, it is a stubborn child, but we need to taper it. You cannot 100% zero it, but we have to transform the tantrum into coolness. So just try, set a target for the child, make sure that you make the child understand that whatever she is asking is unreasonable, and if she really wants that, she has to achieve certain targets. Try this, ma'am, and see how it works. Yes, ma'am. I would like to also inform you one more thing, that if you can go back to the workshop, one of the workshop we have covered as for tantrum, okay, how to handle the tantrum. Okay, so you can also check the same and you will get all your answers. Yeah, we do have a question from Nitya ji also. Nitya ji, can you please open your video? Hi, ma'am. Hello, how are you, ma'am? Hi, ma'am. Very informative session, ma'am. Thank you, ma'am. But I joined in between the session, that I am feeling very bad. And my question is, siblings fight, ma'am. My boy child will be continuously hitting my girl child. Simply, he go that way and he will just give one, and he will come this side and he will give one. I tried so many techniques, but none of them working. It is increasing day by day. Okay. Has this incident happened in the school? When a boy No, ma'am. No, ma'am. Before school only it started, ma'am. Okay. Have you tried and given time out to the child? Ma'am, if your boy hits your girl, if the boy is hitting the girl, you can give time out to the boy and make sure that you praise the girl in front of him. Okay. In a very positive way. You are a very good child. You are not hitting your brother back. I'm really proud of you. Or say some good words that can motivate the girl and can make the opposite child understand that my mother is not happy with my behavior. You can give the child a timeout stating that you stay inside the bedroom with the child. Your girl child is outside with your partner or with any of the family members, and let her enjoy. And you and the boy child don't do anything. Just sit and tell him, this is a punishment for you and me both because you hit the sister. If I am alone,
Yes, ma'am, go ahead. If I am alone, ma'am, if I am alone, no one is there. If I am alone with the kids, Ma'am, what you can do is you can make sure that you play with the girl child and make sure that your boy child understands that my mom, she is not responding to whatever I did. Ma'am, sometimes as mothers, our eyes moment should be such that the child understands that we did not like the behavior. Sometimes words are important. Sometimes some decision making is important. Sometimes elders also play a part in this. Sometimes you and your partner play a part in this, or the child, the second child will play a part. So, ma'am, try different ways to make the child morally understand that he is doing wrong. okay. And hitting, ma'am, means sometimes we as mothers get into the pressure, and out of pressure and aggression reaction comes out, we hit the child. But That's happening, ma'am, now. yeah, because that's your pressure coming out. Yes. The same scenario happened with me. Being an educator, I always believe that the child should be given free space to learn and do everything. But sometimes when you are down with so many things, maybe it's your health, maybe it's your personal reasons, professional, or with the child you are trying to adjust, you lose your control. And what happens is you react into a hitting. And that is very soft hitting because you know it's your own child. But the guilt stays for a couple of days. And the child feels dejected. Better don't do this. Make an environment wherein you are happily enjoying with the girl and the boy is being left. But do not make him feel that he is left. But anytime he comes and tell you that why aren't you playing with me? Why are you playing with Didi? Why are you not talking to me? Explain. You hit someone, I'm not going to hit you back, but I'm not going to talk to you. I'm not going to fulfill your demands. Go say sorry to your sister and come back, we will play together. And Okay. now you are having twins, so this is going to collide. So with this, you have to just take the situation as it comes. For all, ma'am, whenever there are two children to a parent, be it an elder, younger, or twins, parents Twins, have to ma'am. take the situation the way it Yeah. comes. They are twins, ma'am, actually. So try doing this methodology which I told you. And Yes. if you still get stuck somewhere, write down to us. We will guide you with all the information that we are having. Yes, ma'am, And sure. you can ma'am. keep on trying. Sure, ma'am. I am following from first, ma'am. Your sessions, everything. It's excellent and wonderful, ma'am. Informative. Thank you, ma'am. Thank you so much. Nitya ji, if you can, we would like to have your feedback for these sessions. Yes, sir. Sure, sir. We will separately, contact you and we can have a discussion. Like, what would you like to have us to include in this session and all? Okay. Yes, sir. Sure, sir. Okay, Vishwaji, please ask if anyone has any question. Thank you, sir. Yes, anyone have any questions? I think all parents are satisfied with our topics, tricks, tips for that. Yeah, so with this, I would like to, inform you all people that the next is we are announcing our contest winner. Miss Bhumika Mukherjee is the contest winner. Do we have Miss Bhumika right now in this session? So I believe Bhumika ji is not available right now. Okay. So yeah, the last thing is gift for everyone. We are having a wonderful ebook which we have crafted for all you people.
that how to handle the hyperactive child. और ये बहुत ही wonderful एक e-book है जो हम अभी आपसे share करना चाहता है as a e-book as a gift, and the link for the same is into the chat box right now. आप इसको click कर सकते हैं और download कर सकते हैं. It is completely free for all of you. And yeah, with this I would like to conclude this session. Thank you very much, and please be connected with us and share your feedbacks, and जो भी हमारे next workshops है उसको भी attend कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए. It is completely free. It is our gift to all of you. All the parents, we want to make your journey really beautiful journey, parenting journey. So share कीजिए दूसरे parents के साथ, and let's enjoy this session. Thank you very much everyone. Have a nice time. Thank you all parents. Thank you everyone for till the last.